So dear friend, yesterday we were discussing about the phlegm. And there are two conditions we have discussed yesterday. Number one, phlegm over the heart. Number two, phlegm plus fire over the heart. So there are two conditions. Number one, flame over the heart. Number two, flame fire over the heart. यानी एक कंडीशन में हमारे हृदय के ऊपर फ्लेम का आवरण है, और दूसरी कंडीशन में फ्लेम प्लस फायर का आवरण में एक कंडीशन में हमारे हृदय के ऊपर कफ है, और दूसरी कंडीशन में हमारे हृदय के ऊपर कफ भी है और पित्त भी है। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? माय वॉइस इज स्लो। ओके, तो जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, आखिरकार कफ ने हृदय को क्यों चुना? कफ का आवरण और कहीं हो सकता था। कफ could choose some other destination, because कफ is forming in the body because of the weakness of the spleen. The cause of phlegm formation is the weakness of the spleen. Now, this cough is searching the meridian, searching the organ who is weak, who is having poor energy. This cough will get deposited there. एक बार कफ का निर्माण हो गया, एक बार फ्लेम का निर्माण हो गया, और फ्लेम और कफ के निर्माण के लिए स्प्लीन जिम्मेदार है। एक बार स्प्लीन की कमजोरी के कारण कफ का निर्माण हो गया, अब ये बना हुआ कफ जगह ढूंढेगा कि कहां मैं जमा हो जाऊं। ये थ्योरी कितनी शानदार थ्योरी है। यही थ्योरी आयुर्वेदा में है और यही थ्योरी एक्यूपंक्चर में है। द सेम थ्योरी गिवन इन द आयुर्वेदा, द सेम थ्योरी गिवन इन द एक्यूपंक्चर। इन द आयुर्वेदा इट्स गिवन ख वेगुणियात। ख वेगुणियात, ख मीन्स स्पेस, ख मीन्स स्पेस। So wherever the empty space, the toxin will get deposited there. यानी ये डोज बनने के बाद ढूंढते हैं जगह कि कहां जमा हो जाए। हृदय कमजोर है, हृदय में ताकत नहीं है, तो जमा हो गए। यही कारण है कि अगर एक व्यक्ति जिसका हृदय बहुत शक्तिशाली है, एक व्यक्ति जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, एक व्यक्ति जिसका हृदय बहुत अच्छा है, कितना भी कफ बन जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। The person will not get affected if the heart is strong. Even there is a bulk formation of the phlegm, it will not affect the heart. तो जब भी कोई चीज प्रभावित होती है, पहले हार्ट का कमजोर होना जरूरी होता है, तभी जमा होगी। मानो कि किसी का कोई दूसरा ऑर्गन कमजोर है तो फ्लेम वहां जमा हो जाएगा। When this flame formed, it's searching the place. Sometimes it's finding some meridian is weak and it is getting deposited in the meridian. कभी कभी ये पता करता है कि भाई ये मेरिडियन कमजोर है, इसमें जमा हो जाओ, तो फिर उसमें नमनेस पैदा करता है। When the flame is getting deposited in some meridian, it's creating the numbness. एक व्यक्ति बोलेगा मुझे हमेशा यहां पर नमनेस रहती है, I am feeling some numbness here because the meridian is weak and the invisible form of phlegm
have deposited there. किसी व्यक्ति के चमड़ी के नीचे जमा हो जाता है। Sometime it's getting deposited below the skin. कभी कभी ये चमड़ी के नीचे इकट्ठा हो जाता है। और जब ये चमड़ी के नीचे इकट्ठा होता है तो लंप का निर्माण करता है, लंप, लाइपोमा। और चमड़ी के नीचे जमा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्ट कमजोर होगा। द पार्ट इज वीकर, देयर ओनली दिस फ्लेम गेट डिपोजिटेड and will form the nodule, will form the lipoma, will form the fibroid. गांठों का निर्माण कर देगा फ्लेम। अब फ्लेम चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो, गांठ बना सकता है। ऐसी गांठ बनाता है, काटो तो कुछ नहीं निकलेगा, ऐसी गांठ बनाता है। If you cut the nodule, sometime there is a nodule. If you cut it, you will not find anything. Oh, what is? Nothing is there. That is made by flame. एक लेडी हमारे पास आई, उसको कलाई में एक यहाँ पर लंप बना हुआ था, लंप. So the one lady was having lump here. She consulted me. She have done the consultation and decided, okay, now from, like she consulted on the Monday, and she told me, okay, now from Wednesday we will start the treatment. कि मंडे को उसने कंसल्ट किया, अब बुधवार से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. On the Tuesday, she has beaten his child. और उसका लाइपोमा गायब हो गया. लंप गायब हो गया. मैंने कहा भाई आपने बड़ा गलत काम किया, पीट के पीटा तो लंप गायब हो गया, पिटाई लगाई तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ. दिस इज द रियल स्टोरी. दिस इज नॉट द imaginary story, this is the real story. So the lump of flame can come overnight and can dissolve with anything. किसी भी चीज से dissolve हो सकता है, ऐसा होता है वो lump. And this lump is visible, fully visible होता है देखने में, right? So now, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज में जो नमनेस आती है वो भी फ्लैम की है. नो, द नमनेस इन द डायबिटीज माइट नॉट बी द बिकॉज ऑफ फ्लैम. यूट्राइन फाइब्रोइड इज नॉट द फ्लैम. यूट्राइन फाइब्रोइड इज ब्लड स्टेसिस. ध्यान रखिएगा, जो यूट्रस में फाइब्रोइड बनता है वो फ्लैम नहीं है, वो ब्लड स्टेसिस है. द ओवेरियन सिस्ट इज नॉट द फ्लैम. ओवेरियन सिस्ट इज ब्लड स्टेसिस. The cyst in the breast is not the phlegm, that is blood stasis. तो ऐसा नहीं कि फिर सबको जितनी भी गांठें हैं सब फ्लैम हो गई, नहीं. यूट्राइन ट्यूमर, ovarian cyst, breast cyst, these all are blood stasis, right? तो चलिए बात करते हैं कि पहले क्या किया. देखिए, अब एक व्यक्ति को हमें क्या करना है, डेस्टिनी ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को एक रोग देना है और उस रोग का नाम है सिजोफ्रेनिया, है ना. डेस्टिनी ने डिसाइड किया कि ये व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, बिंदास है, स्कॉलर है, ब्रिलियंट है. अब इसका टाइम पूरा हो गया, अब कुंडली में राहु केतु की दशा चालू हो गई. अब इसको देना है सिजोफ्रेनिया नाम का एक सुंदर सा रोग. नाउ the destiny or the time will give one beautiful disease,
the name schizophrenia. Schizophrenia connected with the brain, connect with the heart, and person is talking with the wall. How are you, ball? कैसी हो ball? और ball में वो imagine कर रहा है कि कोई है. You are looking the person and he is talking to someone, and no one is in front. That is schizophrenia. Schizophrenia means person can imagine anything in the reality. बॉबी कौन सी मूवी आई थी एक, कौन था, कौन सी मूवी आई थी जिसमें वो लड़की थी सिजोफ्रेनिया वाली, हेलुसिनेशन यार, जिसमें साउथ इंडियन मूवी जस्ट फ्यू डेज बैक. हाँ अतरंगी, अतरंगी यार राइट. आप अतरंगी मूवी, you can see Atrangi movie. In the Atrangi movie, the actress was having this disease, schizophrenia. Okay, in the schizophrenia, person is talking to someone, but the person is feeling reality. If you tell the person, oh, no one is there, you are doing useless talk, person will not never talk with you. वो व्यक्ति को अगर आपने बोल दिया क्या यूजलेस, किससे बातें कर रहे हो, कोई सामने है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए सच में कुछ कोई सामने है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर आपसे बात ही नहीं करेगा. उसके लिए वो चीज जो आपके लिए रियल नहीं, उसके लिए रियल है. अतरंगी मूवी देखिएगा, समझ में आ जाएगा. सो इन द सिजोफ्रेनिया, तो डेस्टिनी ने डिसाइड किया इस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया नाम का रोग देना है. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसका थोड़ा हार्ट कमजोर किया जाएगा. सो द फर्स्ट स्टेप, the heart will become weaker. Okay. And how can the heart become weaker? Lack of love. Lack of love will make the heart weaker. Or hatred can make the heart weaker. प्रेम का अभाव और घृणा आपके हार्ट को कमजोर बनाने के लिए काफी है. सो द स्टेप नंबर 1 इज ओवर. स्टेप नंबर 2, नाउ द स्प्लीन विल बिकम वीकर, so your digestion will become weaker and your spleen will become weaker. So whatever you will eat, it will get converted in the form of phlegm. So this is the step number 2. So the step number 1, because of the lack of love or because of the hatred or because of the anything else, there might be 100 reasons. The step number 1, your heart will become weaker. The step number 2, now your digestion will be sluggish, your spleen will be sluggish. So now because of the spleen chi deficiency or the spleen yang deficiency, now there is a formation of phlegm. Because if you want to make the phlegm, then there should be spleen chi deficiency. Okay, now this phlegm will go around all around the body and we'll see the which part of the body is weak. As soon as the phlegm will see, oh, heart is weak, it will get deposited on the heart. जैसे ही फ्लेम को पता चला, फ्लेम तो घूमेगा सारे शरीर में, और जैसे इसको पता चला कि हार्ट कमजोर है, हार्ट के ऊपर ये जम जाएगा. हो गया. Now, as soon as it will come on the heart, what will happen? Like if there is a cloud, you cannot see the sky. अगर बादल हो तो आपको आकाश नहीं दिखता. उसी प्रकार से जब आपके हृदय के ऊपर फ्लेम आ जाता है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, क्लियर समझ में नहीं आती. जैसे एक भैंस की आंखों पर एक हरे रंग का चश्मा लगा दो तो उसको हर चारा हरा हरा दिखेगा, देखिएगा, है ना. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. So if you put the green color spectacle on the eyes of buffalo, she will see everything is green. She will see, wow, today is very beautiful bird. Everything is green. In the same way, as soon as the flame will overlap the heart,
the person will see everything in a different way. Perception will change entirely. That is called schizophrenia. Okay. And the same thing might happen with the kids, some other kids, like see, if we see the small kids, they are having poor heart energy because of some reason. Even they are having memory loss because of some reason. Because memory is also the output of heart. Now, there is a weakness of the spleen. It will make the phlegm. This phlegm will get deposited on the heart. Now, heart is responsible for speech. So the small kid will not able to speak very properly. It will create aphasia, the disorder of the speech. And even heart is also giving energy to the brain, making your memory good. So the kids will suffer with the mental retardation or the dull memory. तो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनका हृदय कमजोर है, किसी कारण से हो सकता है कि माता पिता से ही वो कमजोर हृदय लेकर आए हों और उनके शरीर में स्प्लीन की कमजोरी से अगर फ्लेम का निर्माण हो गया और वो फ्लेम उनके हृदय के ऊपर जम गया, तो पहले तो हृदय के दो काम है, पहला वो जवान को ताकत देता है और दूसरा वो हमारे ब्रेन को ताकत देता है, मतलब हमारी मेमोरी शक्ति को बनाता है। तो छोटे बच्चे मेंटल रिटार्डेड हो जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। सो इवन द कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन is the poor heart, then the poor spleen making the phlegm. This phlegm is getting deposited on the heart and the kid is becoming mental retarded. In the same way, it might happen with anyone. Okay, one person is very good, very strong. एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, उसका सब अच्छा है. And now he's doing job, like he has become middle-aged person, maybe 55 years of age or the 50 years of age. Now, because of workload, because of too much pressure, because of not able to sleep in the night and all the time working and working, heart become weak in the middle age. Okay, in the middle age, if heart become weak, and there are many factors, they might do this thing. If the heart become weak, and if the heart is becoming weak, even person might suffer with the paralysis, with the cardiac stroke, with the palpitation, with many different types of the heart disease. एक व्यक्ति है जिसका हार्ट कमजोर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आराम नहीं कर पाता, काम करता रहता है, सोता ठीक से नहीं है, 50-55 साल की उम्र में उसका हार्ट कमजोर हो गया, बीपी आ गया, पाल्पिटेशन हो गया और उसे पैरालिसिस भी हो गया, चलो, और ठीक भी हो गया, भले आधा ठीक हुआ। पैरालिसिस होता है तो लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो 50%, 70% ठीक हो जाते हैं। So the person was having poor heart, and because of the poor heart got the attack of paralysis with the many other combination factor also, he got the paralysis. Now person will become okay, but still having the effect of paralysis, maybe 30% or the 40%. Heart is already weak. Okay, heart is already weak. Heart तो पहले से कमजोर है. Now the suddenly spleen become weak. Phlegm is forming. Now phlegm is searching. Oh, heart is weak. Now phlegm will get deposited in the heart. Even the person who got paralysis earlier. Why? Because the heart was weak. Now he will suffer with this different problem. The phlegm will overlap the heart and might create many problems. So what I want to tell you, if the person is having poor heart in the childhood or in the middle age or in the young age, anytime, so phlegm will get deposited there if spleen is weaker.
So remember this thing, right? So now, if you want to treat the patient suffering with the schizophrenia, so what is the diagnosis? Phlegm depositing over the heart, or in the very beautiful word we can tell phlegm misting the heart, or we can tell phlegm misting the mind, right? This is the diagnosis as per acupuncture. So what is the treatment? Now in the same way we have to do the treatment. See, अब आपको ट्रीटमेंट करना है, तो सोचिए अब मुझे एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना है जिसके हृदय में फ्लेम जमा हुआ है, तो पहला क्या होगा स्टेप मेरा, बताइए, आप लोग बताइए. I want to treat the patient who is suffering with the mental retardation or the schizophrenia or the not able to speak, even having cough or rattling sound in the throat. What will be the first step? मतलब क्या करूंगा मैं? कफ को निकालूंगा, पित्त को निकालूंगा, या हार्ट को टॉनिफाई करूंगा, स्प्लीन को मजबूत करूंगा. What will I do first? The first step will be remove the phlegm. पहले कफ को निकालो, जो भरा पड़ा टैंक में उसे निकाल के फेंको. ओके, फर्स्ट स्टेप, एक्सपेल द कफ. है ना, आपको टीवी देखना, टीवी के ऊपर धूल जमी है, तो पहले कपड़ा लेके उसको धूल को ऐसे साफ कर दो. थोड़ा दिखना तो चालू हो पहले कुछ, फिर बाद में देखेंगे, है ना. फिर अगला स्टेप होगा, खिड़कियां बंद करेंगे, धूल वहीं से तो आती है. So we have to do the treatment step by step. The first step will be remove cough, remove phlegm. कैसे निकालोगे फ्लेम को? फ्लेम को निकालने के बहुत तरीके अभी हम बात करेंगे. The step number 1, remove the phlegm. Step number 2, फ्लेम बना कौन रहा है? आ कहां से रहा है? स्प्लीन से आ रहा है ना, स्प्लीन से आ रहा है, स्प्लीन से आ रहा है. तो स्प्लीन को मजबूत करो भाई, टॉनिफाई द स्प्लीन. दिस इज द सेकंड स्टेप. पहले कफ को का निर्माण बंद करो. फर्स्ट स्टेप, एक्सपेल द फ्लेम एंड स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ द फ्लेम. ये पहला स्टेप होगा, है ना. क्लियर और नॉट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि कफ ही तो गड़बड़ कर रहा है. स्टेप नंबर 2, नाउ स्ट्रेंथन द हार्ट. कि भाई अब कब भी बन जाए ना तो हार्ट का कोई बाल वाका ना कर पाए. नो वन कैन अफेक्ट द हार्ट इवन द कफ इज फॉर्मिंग. सो द स्टेप नंबर 2 विल बी, स्टेप नंबर 1, एक्सपेल कफा. स्टेप नंबर 2, who is making the kapha? Spleen. Okay, so strengthen the spleen. Step number 3, strengthen the heart. कि हार्ट को ही मजबूत कर दो, कब बने, फिर जमा ही नहीं होगा. So this is the step by step treatment. So let's see here. So flame in the heart, misting the mind. हमारे हृदय में जब फ्लेम जम जाता है तो हमारे मन को प्रभावित कर देता है. It create schizophrenia,
mental retardation, and manic depression. इसके कारण व्यक्ति को सीजोफ्रेनिया हो जाता है, मतलब उसकी एक अलग दुनिया बन जाती है और वो दीवालों से बात करता है, खुद से बात करता है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है अक्सर बच्चों में, और थोड़ा सा मैनिक डिप्रेशन, थोड़ा मूड अप एंड डाउन होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। So ultimately, the flame is affecting the heart. So this is the heart. Flame is deposited on the heart. Flame is over the heart. Who is making? Spleen is making. Spleen is making the phlegm. Actually, there are three organs who make the phlegm. Lung make the phlegm, spleen make the phlegm, and kidney make the phlegm. Spleen is making 75% phlegm. Kidney is making only 10% phlegm. And lung is making 15% phlegm. Okay. तो लंग 15% फ्लेम बनाने के लिए जिम्मेदार है, स्प्लीन 75% और किडनी 10%. Even we can do the subdivision in the spleen. Spleen chi deficiency is making 15% phlegm, and spleen yang deficiency is making responsible for 60% phlegm. तो फ्लेम यहां कहीं से भी बन सकता है, लंग की कमजोरी से भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्प्लीन ही बनाएगी, और किडनी की कमजोरी से भी बन सकता है। अब फ्लेम कहीं से भी बने, लेकिन हम बार बार स्प्लीन बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर स्प्लीन ही बनाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन में बना रहे तो लंग भी फ्लेम बना सकते हैं। सो लंग कैन मेक द फ्लेम, स्प्लीन कैन मेक द फ्लेम, किडनी कैन मेक द फ्लेम, but why we tell spleen again and again? Because spleen is the organ responsible for major part of the phlegm, 75%. But the person having long depression, during the long depression, lung also can make the phlegm. Even the kidney can make the phlegm, right? So if the phlegm is formed, then it will get deposited over the heart if heart is weak. तो फ्लेम कहीं भी बने, लेकिन अब वो रास्ता ढूंढेगा कि कहां जमा हो जाए, और जैसे ही हार्ट के ऊपर जमा हुआ तो सीजोफ्रेनिया नाम का रोग पैदा करेगा, मेंटल रिटार्डेशन करेगा, मैनिक डिप्रेशन करेगा, और किसी किसी बच्चे में तो इपिलेप्सी भी पैदा करता है। इवन इट कैन क्रिएट इपिलेप्सी, बिकॉज इपिलेप्सी आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉपर सिग्नलिंग इन द ब्रेन। ओके, हार्ट हमारे ब्रेन को सिग्नल देने में बड़ी भूमिका अदा करता है। Even person might suffer with epilepsy, right? Many kids are having mental retardation and epilepsy, so we can treat with the help of this point protocol. Then how to treat? How to treat? So most of the time we are thinking as a spleen is making the phlegm, right?
So how to treat? Step number 1. Remove the phlegm from chest. So the pericardium 5 and the stomach 14 point. Sedation. तो पहला स्टेप है कि छाती में से कफ को निकाल दो इन 2 बिंदुओं की मदद से. स्टेप नंबर 2. Who is making the phlegm? Spleen is making the phlegm. Okay, do something. Tonify spleen. So if you tonify the spleen, now you can stop making the phlegm. अब आप नया फ्लेम बनने से रोक दोगे अगर आप स्प्लीन को टोनिफाई कर दोगे. So how to tonify the spleen? Urinary bladder 20 and the CV12 tonification. चलो फ्लेम का काम तमाम हो गया. Now we have worked very nicely for the phlegm. We have cleared the chest. Now step number 3. Phlegm is getting deposited over the heart because heart is poor, heart is weaker. So why the phlegm is getting deposited over the heart? The reason heart is weaker. Heart is weaker. And because of the heart, memory is poor. Okay. तो हार्ट को स्ट्रेंथन कर दो. So if the heart is poor, heart is weaker, take the backsue point of the heart, urinary bladder 50, and do the even method. हार्ट के पॉइंट को आप टॉनिफाई कर दो. You have to strengthen the heart. So you can take the backsue point of the heart, even you can take the front view point of the heart. Front view point of the heart. Heart के backsue point को ले लो, heart के front view point को ले लो. The front view point of the heart is CV14. तो चलिए हार्ट भी स्ट्रेंथन हो गया, बस मामला खत्म. एक पॉइंट और ऐड करेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा. Just we are adding few more point, then our protocol will get completed. इसी में एक आध पॉइंट और लगाएंगे तो हमारा प्रोटोकॉल समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. So what is the next point which we should add here? तो जब भी हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है जिसे सिजोफ्रेनिया होता है, कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है. Okay. Sometimes patient is having severe problem of the heart. So we are using few more point here, and this is the 4th number step. हम एक चौथा नंबर स्टेप लगाएंगे, step number 4. And the step number 4, what we are doing, we are using heart 9 and the governing vessel 26. Heart 9 is the Jingwell point, and governing vessel 26 also the Jingwell point. Both are the Jingwell point, and Jingwell point who can revive the person, who can tell the person, okay, get up. तो जिंगवेल पॉइंट का मतलब होता है जो व्यक्ति को बोले उठो, एकदम से उठा दे. तो हम हार्ट 9 को ब्लीड भी कर सकते हैं. हम गवर्निंग वेसल 26 का प्रयोग करते हैं अक्सर. These 2 points are very wonderful points for reviving the person. So this is the completion of the protocol, and this is the protocol for mental retarded kid for schizophrenia. Okay, so this is the protocol.
for schizophrenia, for mental retarded kid, even the child suffering with the epilepsy and kapha, even the person having wind stroke, paralysis, and kapha. So what is the treatment? Pericardium 5, stomach 40, sedation. CV12, urinary bladder 20, tonification. Urinary bladder 15, CV14, even method. Heart 9, and governing vessel 26, sedation. So this expel the kapha. This tone spleen, this improve heart, this revive person. तो ये हमारा प्रोटोकॉल समाप्त हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 point. Wonderful combination. Excellent point. This is called phlegm misting the mind. Phlegm misting the mind. Clear? When I'm telling kapha, my intention is phlegm. And there are two types of phlegm. One, it might be visible and it might be subtle. So phlegm misting the heart. Sometimes this phlegm is not visible, but creating heaviness on the heart. This will work for all the childs if they are having like mental retardation or the autism or any other problem with the rattling kapha sound in the throat. Okay, this protocol will work. Heart 5 is the very good point for aphasia. Okay, but we have many other points also. They are good for aphasia. Okay. Even it is going to work for ADHD child, yes. If we see these symptoms like fine, okay, done. Okay, fine. So let's proceed. Okay, so what is the full form of ADHD?
ADHD. The meaning of A, the meaning of D, the meaning of H, the meaning of D. The meaning of A, attention. The meaning of D, deficit. The meaning of H, hyperactivity. And the meaning of D, disorder. So attention deficit hyperactive disorder, यानी attention है नहीं और हाइपर एक्टिविटी है, उसे कहते हैं ADHD. कि अटेंशन नहीं है, ऐसे बच्चे शांति से बैठते नहीं है, उठापटक मचाए रखते हैं. है ना. ऐसे बच्चों को के लिए आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से, यू कैन डू द ट्रीटमेंट, राइट. फाइन. अब हमने कल एक प्रोटोकॉल की बात कही थी आपसे, फ्लेम फायर. So what is the difference between this only flame and yesterday we talked about the flame fire. आज तो हमने बात की कि हार्ट के ऊपर केवल फ्लेम है, और कल तो हमने बात की थी कि फ्लेम भी है फायर भी है. तो क्या अंतर होगा दोनों में? Okay. So if we talk about the yesterday protocol, कि flame भी है fire भी है. If the fire is there, then person will become aggressive. Mania, shouting, killing, hitting, beating, मारेगा, दौड़ेगा, पीटेगा, सामान उठा के फेंकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा. फायर के कारण उसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाएगी, है ना. अब उसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे? उसमें आपको फ्लेम भी निकालना पड़ेगा और फायर भी निकालनी पड़ेगी. यानी अब इसी प्रोटोकॉल में अगर आपको फायर भी निकालनी पड़ जाए तो उस पागलपन के दौरे का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा. Then you have to expel the fire as well. If we talk about the protocol like yesterday, you have to expel the fire as well from the heart. तो अब ट्रीटमेंट कैसे क्या बनेगा? कल के प्रोटोकॉल के अनुसार अगर आप देखोगे तो प्रोटोकॉल का निर्माण कैसे होगा? नंबर 1, remove the flame from the chest. But it's not complete. Even we have to expel the fire. Number 2, remove the fire from the heart. Remove the fire from the heart, right? Then strengthen the heart. And fire is damaging the brain, then strengthen the, means do something for the brain. तो उसका जो ट्रीटमेंट हमने किया था उसमें हमें फायर भी निकालनी पड़ेगी, और फायर को निकालने के लिए आपको लिवर 2 लिवर 3 को भी सेडेट करना होगा, क्योंकि लिवर 2 लिवर 3 संपूर्ण शरीर से गर्मी को निकालते हैं, फायर को निकालते हैं. द लिवर 2 लिवर 3 सेडेशन आर एक्सपेलिंग द फायर फ्रॉम होल बॉडी. और हार्ट में से भी फायर को निकालनी पड़ेगी. इसलिए अगर आपको ध्यान हो, हमने हार्ट 7 हार्ट 8 हार्ट 9 तीनों को सेडेट किया था. So you have to expel the fire from the heart. So sedate heart 7, heart 8, heart 9, and sedate liver 2, liver 3. इतने सारे पॉइंट सेडेट करोगे तब फायर निकलेगी. तो फ्लेम तो निकालना ही पड़ेगा. फ्लेम निकालने का सेम मेथड है जो आज हमने किया, लेकिन फायर भी निकालनी पड़ेगी. So you have to expel the flame, you have to expel the fire. So when you will expel the flame and you will expel the fire, then only you will able to treat flame fire. अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस यस यस. ओके.
अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर है, अगर किसी व्यक्ति के हृदय में फ्लेम के साथ फायर बढ़ गई है, तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, एकदम पागलों की तरह हो जाएगा। और फिर आपको फायर भी निकालनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि जो साधु संत होते हैं, जो बहुत ज्यादा जप तप करते हैं, तो फायर बढ़ जाती है, तो उनकी फायर को भी लिवर 2 लिवर 3 सेडेट करके ही निकाला जाता है। इफ द पर्सन, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही? ये तो लोग बोल रहे हैं क्लियर आ रही है। आ रही है ना? सरबजीत जी आ रही है आवाज? ऋचा जी आ रही है? तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है क्या? थोड़ा स्लो होगी ना पहले से, वो माइक्रोफोन निकाल दिया इसलिए स्लो होगी। अभी आ रही है? अब अच्छी आ रही है? चलिए बढ़िया। हाँ अभी ठीक है, वेरी क्लियर। ये देसी माइक्रोफोन है, पहले वाला फॉरेन का माइक्रोफोन था। अभी देसी वाला है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा देसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो फिर से लो हो गई, फिर से लो हो गई, चलिए मैनेज करिए, फाइन। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर जो साधु संत होते हैं, साधु संत जब बहुत ज्यादा जब तब ध्यान करते हैं, एकांतवास करते हैं, उनके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए इतना चंदन लगाना और ये लगाना इसलिए करते हैं। So why the many saints they are doing regular japa meditation? Why they are putting too much sandal and paste and all? Because of fire. So even if we want to sedate the fire, we have to do the sedation of the liver 2 and liver 3 for them. Many times the person who is doing spiritual practice, they become very aggressive, very aggressive. You can't see, you can't stand in front of them. Why? Because of the fire. So they are putting the chandan, तो चंदन का लेप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ताकि उनकी गर्मी शांत। और पानी के अंदर फिर ध्यान करते हैं, है ना, यहाँ तक पानी के अंदर जाके ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? पानी के अंदर ध्यान क्यों करते हैं? Because when the person doing japa meditation, it is igniting the heat. So you have seen many person are going in the river and doing the meditation. They are going till here in the river and doing the meditation. So there's a scientific reason, because of japa, there is heat is igniting. So we can reduce the heat with the liver 2 and liver 3 sedation. अगर ऐसे किसी साधु के अंदर फ्लेम बन गया, तो फिर वो एकदम चिल, उनका यही वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, they become violent. Okay, so sedate the liver 2 liver 3, sedate the heart 7 8 9 to calm down the heart. So sedate the fire on one side, sedate the phlegm, pericardium 5 stomach 40 on other side. Then if you sedate the flame and fire, then you will able to treat flame fire violent behavior. जब आप दोनों को निकालोगे तब वायलेंट बिहेवियर को ट्रीट कर पाओगे। ओके, तो समझ जाइएगा, कभी आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, देख लेना कि भाई इसके अंदर फ्लेम है तो फ्लेम को निकाल दो,
कि लगता है यार ये थोड़ा एग्रेसिव है, तो फायर को भी निकाल दो। और फायर को पहचानने का दूसरा कारण है कि फायर में बीपी भी एकदम बढ़ जाता है, एकदम फायर विल मेक बीपी वेरी हाई, ब्लड प्रेशर वेरी हाई, राइट। और इसके बाद फिर हमने कल का प्रोटोकॉल समझी था, आपको दिखा देता हूं एक बार। ये हमारा प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ यस्टरडे। So pericardium 5 sedation and stomach 40 sedation to remove the phlegm. Now reduce the heart fire. So heart 7, 8, 9, urinary bladder 15, sedate. Then reduce the fire by the liver 2 and liver 3. So we have expelled the flame, we have expelled the fire, and from also we have expelled the fire. Now calm down the brain. This is the another step. So DU20 sedation, DU24 sedation, gallbladder 13 sedation, gallbladder 15 sedation, CV15 sedation, then calm down the brain. Okay, in this way you can do this. और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरे पॉइंट लगाओ, आप बस सोच सोच के लगा दो, जो जो ध्यान आ जाए तो भी काम हो जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जो लिखा है सब लगाना है। आप सोचो यार, फायर को निकालना है, लिवर 2 लिवर 3, हार्ट की गर्मी को निकालना है, हार्ट 7 8 9, अच्छा फ्लेम को निकालना है, और भी लगा दो एक दो पॉइंट। स्प्लीन 6 भी फ्लेम को निकाल देता है, उसे भी सेट कर सकते हो। फिर कूल डाउन द ब्रेन, हु विल कूल डाउन द ब्रेन, DU20 विल कूल डाउन द ब्रेन। फिर जो जो ध्यान आए लगाते जाओ, ऐसा जरूरी नहीं जो इसमें लिखा है वही लगाना है, नहीं, आप अपने मन से दो चार लगा दो। आपने ईयर ऑरिकुलर सीखा है यार, लिवर ईयर अपेक्स को ब्लीड कर दो तो भी निकल जाती है फायर, उसे ब्लीड कर दो। यू कैन डू इन दैट वे, यू विल गेट द रिजल्ट्स डेफिनेटली। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे कल। कौन सी लास्ट पिक्चर दिखानी है? वो अटेंशन डेफिसिट वाली। हाँ, स्प्लीन 6 को भी साइडेड कर देते हैं। अगर फ्लेम को निकालना है तो स्प्लीन 6 को भी साइडेड कर देते हैं। फ्लेम प्रोटोकॉल की वो तो कल वाली थी। हाँ, दिखा देते हैं, चलिए। ये रहा, ये, दिस इज द फ्लेम मिस्टिंग द माइंड। डन, चलिए। फ्लेम फायर होगी तो बीपी हाई होगा, फ्लेम फायर में बीपी हाई ही होगा। अगर बीपी लो है तो और कुछ घटना, एम्प्टी हीट हो सकती है, एम्प्टी हीट आप, या फिर हीट नहीं और भी कुछ हो सकता है। मतलब आप सोचो कि किसी को सिजोफ्रेनिया और लो बीपी वो हो सकता है ना, लेकिन फ्लेम फायर दोनों होगी तो 90% तो बीपी हाई होने की पॉसिबिलिटी है। हार्ट के पॉइंट को भी हम सेडेट करेंगे तो हार्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा। वी हैव टू सेडेट द पॉइंट इन द कंडीशन इफ देयर इज वेरी हाई एनर्जी। अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, पत्थर उठा के फेंक रहा है आपकी तरफ, तो आप हार्ट के पॉइंट को टोनिफाई नहीं कर सकते, फिर तो आपको ही उठा के फेंक देगा वो, पहले तो पत्थर फेंक रहा था है ना।
तो आपको उठा के सीधा फेंक देगा। तो सेडेट करना है, सेडेट करने से हार्ट मजबूत हो जाएगा। हार्ट में गर्मी बढ़ती है, वो भी हार्ट को डैमेज करती है। सो आप सेडेट करोगे तो हार्ट शांत हो जाएगा, हार्ट स्ट्रेंथन होगा, उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा फिर, राइट। पहले जमाने में जब देखा होगा, बड़े बड़े राजा जब साधुओं के पास जाते थे तो उनके चरणों के पास बैठ जाते थे कि जब आंखें खुलेंगी तब ये देखेंगे, और बीच में जगा दिया तो वो आंखों से भस्म कर देंगे, है ना। वो सब फायर है, फायर बहुत तेज होती है फायर। जो आंखों से निकलती है वो लिवर फायर है, लिवर फायर। और आंखों से बच गए तो हाथ में पानी लेके फेंक देंगे, ले चल भस्म हो जा तू। है ना? तो बच के रहना, कभी कोई सच्चा साधु मिल जाए ना तो उसको गुस्सा मत करना भाई। अरे ये पूछ रहे व्हाट आर द सिम्टम ऑफ फ्लेम फायर, ये तो हम पढ़ रहे हैं कल से यही तो पढ़ रहे हैं कि सिम्टम फ्लेम फायर के क्या है। कल की क्लास आपने ज्वाइन की थी क्या? व्हाट आर द सिम्टम ऑफ फ्लेम फायर, you have yesterday we have discussed the same thing, है ना। Okay, you go through with the video of yesterday, still you have difficulty to understand, you can ask me, okay, no problem. Okay, no problem, you go through with the yesterday video, then you can ask. What is the difference between heart fire and heart flame? Yeah, fire will make person, fire will create mouth ulcer, excitement, anger, insomnia, and flame will make depressed, lazy. Flame means kapha, kapha means laziness, fire means aggressiveness. Okay, done, no problem, you can see it. Mental as per yesterday symptom, mental confusion, rattling sound, aphasia, paralysis, epilepsy, all symptom together build today's protocol. All symptom will not be together, there might be only 3 symptoms. You will see the different patient with the one patient is having only epilepsy, but another patient is having only schizophrenia, but another patient is only having mental confusion. Okay, so the different patient might be having different thing. Okay, it's not mandatory that person will be having each and every symptom. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने 10 लक्षणों की बात की है, पेशेंट में 10 के 10 मिलेंगे, नहीं, 5 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक ही मिले, तो हमें पहचानना पड़ेगा। फिर हमें पहचानना होगा, उसका गले में खर की आवाज, उसके अंदर बनने वाला कफ, है ना, वो सब जानकर पहचानना पड़ेगा। फीलिंग ऑफ डेथ, फीलिंग ऑफ फियर ऑफ डेथ, फीलिंग ऑफ डेथ। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है ना, और पास में पुलिस वाले खड़े हैं, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, करने की कोशिश की, है ना, और लोगों ने बचा लिया, तो पुलिस वाले बाद में क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? एक व्यक्ति, जैसे हमारे बड़ोदरा में क्या हुआ, बड़ोदरा में बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सुर सागर, वहां पर एक व्यक्ति कूद गया मरने के लिए, लेकिन इतना भीड़ भाड़ है, वहां मरना असंभव है, लोगों ने बचा लिया उसको। पुलिस वाले क्या करेंगे? अब पुलिस वाले उसके घर के लोगों को परेशान करेंगे, पैसे ऐंठेंगे, पैसे। उसके घर के लोग इतने परेशान, वो पेशेंट को मेरे पास लेके आए कि इन्होंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की, अब पुलिस वाले हर 2 दिन में चक्कर लगाते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी करते, कभी वो केस ही बंद नहीं हो रहा है। Then I asked the person, why you tried for commit suicide
आपने सुसाइड के लिए क्यों कोशिश की? कि मुझे मौत से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है, जब मौत आएगी तो कितनी खतरनाक होगी, मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा, उस डर से मैंने कहा कि अभी खत्म कर दो। देखो कितना, मतलब जिस चीज से डर लगता है वही कर रहे हो, है ना? कि आप जब किसी चीज से बहुत डरते हो, दिन रात की मौत आएगी तो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, तो अभी खत्म कर दो, है ना? ऐसा। So when the person is having feeling, when the person is having tendency of death, as per the energy science, his aura is very low. कहते हैं हमारा शरीर है, जब शरीर और शरीर के बाहर तक जाता है तो पॉजिटिव हमको एक बनाता है, पॉजिटिव पर्सन बनाता है। लेकिन जब वो ऑरा हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, शरीर से छोटा हो जाता है, तो डिप्रेसिव फीलिंग देता है। बट एज पर द आवर 5 एलिमेंट साइंस, excessive coldness, excessive the coldness or excess bringing the tendency of suicide. अब सुसाइडल टेंडेंसी वाटर एलिमेंट में आती है, वाटर एलिमेंट में, वो पता होगा आपको, है? तो चलिए आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे कल। विल सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल, ठीक है?